183 members responsible for improving animal health, veterinary public health, and animal welfare. At WOA, we are very much aware of the burden of animal diseases. Globally, 1.3 billion people depend on food animals for their livelihood. We therefore believe that it is essential for countries to have efficient veterinary services to provide timely animal health services, including preparedness and response to animal disease epidemics and pandemics. In this regard, WOA's flagship program, the Performance of Veterinary Services, PVS pathway, provides support to countries in assessing their capacity and gaps in delivering quality animal health services. As you may know, India conducted the previous evaluation mission in 2018, and now we continue to work with Ministry of Agriculture and Family Welfare and DAAHD for further strengthening the veterinary services of India. We need good husbandry practices and strong veterinary services to control animal diseases. It was estimated that 20% of animal production losses globally are caused by animal diseases, particularly caused by transboundary animal diseases, or TADs. Antimicrobial resistance, AMR, is another huge concern as it may emerge as the next pandemic for which One Health approach is critical to prevent it. Therefore, the animal health sector has a vital role to play in tackling these global challenges. The World Organization for Animal Health advocates for multi-sectoral partnership to develop successful interventions to prevent, prepare, and respond to health threat. About 60% of existing human pairing every year are of animal origin. WOA strongly advocate controlling zoonotic pathogens at their animal source. That is the most effective and economic way of protecting human health using the concept works closely with the quadripartite partners, namely build systems and capacities to address zoonoses such as rabies, avian influenza, and other health threats such as antimicrobial resistance, as well as food safety. I believe that India has been making huge effort aiming towards building strong animal health system to support food security and livelihood of farmers, taking a One Health approach and implementing various programs and projects in collaboration with international partners. The effort being undertaken by Indian government in line with our concept of tackling health risks jointly involving key stakeholders from human, animal, plant, environment, and wildlife health sectors can have huge benefit to the countries and also to the region. Therefore, this will have far-reaching consequences in enhancing animal disease control, including zoonosis, and the promotion of One Health initiatives in India and in the region. We appreciate that India, holding current presidency of the G20, is also strongly raising the importance of One Health
concept and antimicrobial resistance as the G20 Health Ministers' declaration in August to build more resilient, sustainable, and inclusive health system equipped to address ongoing global health challenges and future public health emergencies and bolster pandemic preventions. All these actions and the technical capacity and resources the country has makes us believe that India can be a leader in the region on One Health approach and supports the regional and global effort to protect animal and public health. Before closing, one personal note I'd like to make is I used to work for the government of Japan, Ministry of Agriculture, Forest and Fisheries, until almost 10 years ago, when I was closely involved in the dairy sectors in Japan. What is called Operation Flood or White Revolution in India. That makes me very, impressive. I also attended World Dairy Summit 2022 held in Delhi last year, September. So this is my great pleasure to have this opportunity to make a visit here first time in Anand, Gujarat, India's milk capitals. Thank you very much once again for inviting Goa to this symposium. I wish you all the successful meeting. Thank you very much. Thank you so much for those words of appreciation and motivation. Moving ahead now, may I request and invite on stage Mr. Takayuki Hagiwara, the Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO representative in India. Good morning. Honorable Minister Pushram Rapula, Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India. Ms. Alka Upadhyaya, Secretary Department, Animal Husbandry and Dairying, Government of India. Dr. Manesh Shah, Chairman, National Dairying Development Board. Distinguished guest, respected senior official from the Government of India, ladies and gentlemen. And thank you very much for the NDDB and staff of NDDB for organizing this important event. On behalf of FAO, it is indeed a privilege to attend this international symposium on sustainable livestock transformation. My name is Takayuki Hagiwara, FAO rep. So I'm very popular there. But when you need me, please do not call me twice, Taka. It means garbage in Swahili, like Kenya and Tanzania. I'm also taking the Amo yogurt every night. So you see, I'm very healthy. Under the FAO strategic framework, FAO is supporting agri-food transformation and UN agenda, no one leave behind. Today and tomorrow, we will witness the importance of sustainable livelihood transformation through this event. Livestock is crucial in the agri-food transformation and plays a significant role in rural transformation and economic development for several reasons. First, food security and nutrition. Second, income generation and employment. Third,
poverty alleviation. Fourth, agricultural diversification. Fifth, job creation and development of wide range of industry, like milk industry. It's very important. Livestock production has economic multiplier effect and the potential to contribute to foreign exchange earnings. The livestock industry in India has been the preeminent player in contributing to the national GDP, generating millions of employment of people and helping the poor sustain their livelihood. The recent progress and the growth in the sector has established India's status in the sector. And history shows that as economy grows, the consumption of livestock product will also. Some of my thoughts on the challenges that facing the sector. First of all, the COVID-19 has been the watershed moment for the industry. Even before the pandemic, the livestock industry faced a continuous threat from the transboundary animal diseases, zoonotic diseases, emerging infectious diseases, and antimicrobial resistance, AMR. These issues affect the health, agricultural, livelihoods, and food security. However, our current attentions to the preventing and controlling livestock-related diseases and including aquaculture is an effective strategy for poor farmers in climate change adaptation compared to the plant man's knowledge and destroy the livelihood of the farmers. Livestock development for climate change has to go with the capacity development of the millions of farmers. The third, the livestock production is seen as a major contributor to the greenhouse gases emissions. While significant progress has been made in the understanding and mitigating these emissions, controlling and reducing greenhouse gas emissions associated with livestock production remains a complex and ongoing challenge. It requires a combination of knowledge, skill, and a collaborative effort across multiple sectors. Fourth, the livestock sector has been identified as a major contributor to environmental degradation, unfortunately, but include deforestation, water pollution, and soil degradation. The water body pollution with certain chemical substance could lead to the serious health hazard for our livelihood. Balancing the need for the increased livestock production with the sustainable environmental practices remained a significant challenge. And fifth, ensuring the animal welfare is also ongoing challenge. There are many activists who emphasize the issue of animal welfare nowadays compared to a decade ago. Animal welfare concerns include overcrowding, confinement systems, inadequate healthcare, and inappropriate husbandry practices. Balancing the need for productivity and profitability with ethical consideration and animal welfare standards is a complex challenge in livestock production. There are so many other issues undermining the sector. However, we are confident that the importance of livestock will only continue to grow. India is now the most populous country in the world and rank 5th in terms of GDP, surpassing the UK recently. The projections suggest that India will overtake Japan by 2030 and become the 3rd largest economy in the world. Given India's status and the soft power, I would like to urge India to contribute to the world as the world is watching how India will demonstrate its capacity to solve issues. India has technologies,
digital capacities, talents, and comparative advantage in language and communication skills. India can show the way to develop systems and models to tackle these challenges, especially for those other developing nations in the South. Standardization and the system approach and the business models are crucial in developing solutions and the system for South developing nations. This is an area where FAO would like to work with India and commit achieving SDG goals and promoting sustainable livestock transformation under India's leadership. With India's respected soft power, India could show an effective path that is relevant to other developing countries in the South. Before coming to Anand, I had the opportunity to visit Gandhi's ashram. Gujarat has produced many great leaders, and I have watched the movie of Gandhi many times. And that was the profound impact on my commitment to work for the people. And I am sure that Gujarat, Anand, I am, and we are witnessing the emergence of another leader in the livestock sector throughout this meeting. And thank you very much again for the organization of this, for the working also FAO as the trusted partner for the development of sustainable life sector. Thank you very much. Wow. Thank you so much for sharing the goals and challenges of agriculture and animal husbandry, as well as appreciating the state of Gujarat and the country, India. Thank you once again. Moving ahead, I would now invite Dr. Jamie Jonker, Chief Science Officer, National Milk Producers Federation, USA, for his address. Thank you, and good morning, everyone. Distinguished panel, G20 delegates, colleagues, and guests. It's my pleasure to be here today to be part of this important conference. And I wish to thank the conference organizers for making me part of this prestigious event. I am Jamie Jonker. I'm the Chief Science Officer of the National Milk Producers Federation in the United States. And so I come from the world's second leading milk production region to the world's first leading milk production country. In my role at the National Milk Producers Federation, I represent the scientific and technology side of our U.S. dairy industry, working with our U.S. government in helping to move our national dairy industry in a sustainable manner. I wear many hats in what I do in the dairy sector. I'm a member of the Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance, overseen by the Quadripartite Secretariat, looking at the important issue of antimicrobial resistance and what we can do to ensure that our antimicrobials continue to be healthful and workful into the future. AMR is a global issue, and it needs to be tackled at a global level, but you take that global issue and bring it to the local level. I'm also chair of the International Dairy Federation Science Program Coordinating Committee, which oversees the scientific and technical program of the IDF. IDF has been in existence for nearly 120 years and has been working in the idea of One Health that entire time, nearly 1 century before the term One Health became part of our global vernacular. The IDF does One Health in many areas: environmental sustainability, animal health and welfare, farm management, nutrition, food safety, standards, and more. IDF rests its ability to serve the global dairy sector on more than 1,200 experts from around the world. And it's my pleasure to see so many of those experts and colleagues in the audience today. The great work that they do in helping the IDF put forth its scientific and technical program helps enrich the global dairy sector. IDF is a sought after and for its expertise and partnered by many international and intergovernmental organizations, international NGOs, and national economies. I like to think of the IDF and its 1,200 volunteer experts and its important staff as the dairy nerds.
I want to say that milk is life. Milk is life for the 150 million dairy farms around the world, including more than economy of milk. For their milk is life for the people, providing superior nutrition for health and vitality as they become adults and as they age and grow into their golden years. And milk is life for the planet. Milk can be part of a regenerative circular economy, produced in a more sustainable manner today than it was yesterday, and more sustainable tomorrow than it is today. Once again, I appreciate the invitation to be here at this very important conference, and I look forward to the many important talks that we will hear throughout the next 2 days. Thank you. Thank you so much for those words. May I now request and invite Ms. Caroline Emin, Director General, International Dairy Federation, to please join us and give a special address to the audience over here. Namaste. Honorable Minister, Madam Secretary, Chair of NDBB, distinguished colleagues and friends, it is an honor to be here with you. You know, I come to India regularly, and it's every time a wonderful pleasure to be here. This is a very important event. What we're doing today, as mentioned by Dr. Lee earlier, talking about One Health, talking about sustainable livestock in India with our international guests, our international organization guests, this is a unique moment. And keep in mind that this discussion actually will be feeding the FAO Global Conference on Sustainable Livestock Transformation that we'll be having in Rome in September. So what we're doing today and tomorrow is very, very important, and very blessed to be here with you to take of that, participating to that. As many of you know, India is one of the perfect examples on the contribution of dairy to nutrition and livelihood, and to the importance of One Health. India has been using dairy production to lift community out of extreme poverty. Dairy has become an engine for socioeconomic development. India is now the largest milk producer in volume and one of the highest consumption per capita. Milk and dairy are significantly contributing to the nutrition security and eating pleasure of Indians. I have experienced the power of the role of dairy in the daily life of many millions of people all around the world, and India is actually one of the greatest examples. As mentioned by Dr. Kawita, IDF hosts is a 2022 World Dairy Summit in Delhi in September. The global dairy community gathered to learn about the latest science about dairy, to share knowledge and good practices. And we got inspired, and we've learned from experts from around the world. And we went back home with the Indian passion for dairy and mother dairy. It stays in our mind and our heart, and it inspired a lot of people around the world. Around the world, food systems are facing what the OECD called the triple challenges: ensuring food security and nutrition for a growing population, supporting the livelihood of millions of farmers and others in the food chain, and doing it in an environmentally friendly way. In my position, I can testify that the global dairy sector is strongly committed to contribute to the delivery of the UN Sustainable Development Goals for the benefit of people and the planet. And we're also strongly committed to climate action. You will see in my presentation tomorrow, I will give a specific example of how dairy is contributing to each of those Sustainable Development Goals. Our sector is proactive and dynamic, and we are coming with a very concrete example on how we could actually continue and scale up that transformation. One element you will be hearing the next 2 days is definitely the impact of enhancing productivity per animal, because that topic has an impact on animal health and welfare. It has an impact on climate. It has an impact on resource. It's really affecting the whole sector. So that's definitely a topic we'll be discussing in the next 2 days. I also wanted to mention that as a sector, we don't only encourage innovation, but we also celebrate it. We have the IDF Dairy Innovation Awards that actually celebrates the innovation around the world in the dairy sector.
and inspire others and ought to continue and improving our sector. Dr. Asiwaga presented earlier the challenges of the sector. I want us to keep in mind as well during those 2 days of discussion of the positive contribution of the sector and the opportunities. I think it's good that we look at both because we actually have a lot of opportunities of what we can do and bring to the world. Recently, the Director General of the One Health leading organization, WHO, WOHA, FAO, and UNEP, said, to build one healthier planet, we need urgent action to galvanize vital political commitments, greater investment, and multi-sectoral collaboration at every level. This is exactly what we're going to do in this event. Our deliberation and recommendation will be shared with our head of states. So now we have an opportunity to share the success stories that Dr. Lee was asking us earlier. We also have an opportunity maybe to give them some recommendation on what they should be doing as countries. And I'd like to actually present 3. The first one, to recognize the critical role of livestock and dairy in healthy diets and sustainable agri-food system. Number 2, to enhance funding to scale up sustainable good practices in livestock and dairy sector in their country. The livestock sector actually have been reducing investment in livestock. It is important that our leaders commit to invest in a sector that they believe can help contribute to the development and socioeconomic development. And thirdly, to include livestock and dairy in their reporting on progress of the UN Sustainable Development Goals. There are concrete examples that go forward to engaging with you all during those 2 days, and I wish you an insightful and fruitful discussion. Thank you so much for highlighting the importance and the depletion of livestock, as well as I'm sure everybody in the audience is equally looking forward to engage on important conversations during the day and tomorrow. Moving ahead now, I would like to invite our chief guest of the symposium over here. नमस्कार, राम राम। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम सिम्पोसियम, जिस पर करीबन 13 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे कार्यक्रम हो रहा है, हमारी मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया भारत की दूध नगरी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। G20 के उपलक्ष्य में FAO, NDDB, भारत सरकार, गुजरात सरकार और हमारे कोऑपरेटिव्स अमूल, NDDB सभी ने मिलकर ये जो आयोजन आज यहाँ किया गया है और इसकी यजमानी NDDB ने की है, इसके लिए मैं NDDB को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम के मंच पर विराजमान हमारे विभाग के सचिव महोदया अलका जी, हमारे FAO के प्रतिनिधि के रूप में ताकायुकी ताकात, बहन कैरोलिना, आप दोबारा मिले हमें। भाई थानावत, हिरोफुमी कुगीता जी वो से पधारे जापान से, जैमी जोंकर फ्रॉम USA, हमारे कमिश्नर एनिमल हस्बेंड्री अभिजीत मित्रा जी, मंच के अलावा हमारे सामने इस मंच को भी गरिमा दे सके ऐसे महानुभाव विराजमान हैं।
हमारे लोकप्रिय सांसद भाई मितेश पटेल जी इधर हैं, लोग इनको प्यार से बका भाई कहते हैं। हमारे एमएलए हैं योगेश भाई, सीडी पटेल साहब हैं। हमें यहाँ बड़ी गर्व से बोलना चाहिए कि हमारे अमूल के चेयरमैन श्यामल भाई इधर विराजमान है, उनकी पूरी टीम है, सोडी साहब भी विराजमान है। हमारे 2 वाइस चांसलर महानुभाव यहाँ विराजमान है, हमारे केलावाला जी और कथिरिया जी विराजमान। यहाँ से जो जिक्र हुआ कि हम छोटे किसान यहाँ ज्यादा है, छोटे एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा है, ऐसे हमारे छोटे अमूल के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ने वाले हमारे घनश्याम भाई और अश्विन भाई भी इधर मौजूद है। एनडीडीबी के सभी साथी लोग, अमूल के परिवार से आए हुए सभी लोग, हमारे किसान भाई बहन, कोऑपरेटिव से जुड़े सभी भाई बहनों को इस इवेंट के लिए बधाई और शुभकामनाएं। अभी यहाँ बहुत सारी बातें आप लोगों ने सुन लिया है, इसमें बहुत फिगर आए, बहुत साइंटिफिक सारी चीजें आपके संज्ञान में लाने का प्रयास हुआ। मैं भारत सरकार के पशुपालन विभाग की ओर से खास करके इसको आनंद में रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे संक्षिप्त में इतना ही कहना है कि हमारे इस कार्यक्रम में विदेश से जो लोग हिस्सा लेने के लिए आए हैं और डायस पर जो इंटरनेशनल फोरम के प्रतिनिधि सब विराजमान है, उनकी संज्ञान के लिए क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु पशुपालन विभाग को स्वतंत्र मंत्रालय बनाने का काम किया और इसको इंडिपेंडेंट मंत्रालय बनाया। और इसके चलते इस विभाग पे फोकस करते हुए, जैसे यहाँ जिक्र हुआ कि इसमें अब साइंटिफिक इंटरवेंशन होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का प्रयोग होना चाहिए, सस्टेनेबल करने के लिए जो भी रास्ते बताए गए हैं, मैं मानता हूं कि हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन करने का निर्णय लिया गया और पशुपालकों के दरवाजे पे टेक्नोलॉजी को पहुंचाने के लिए हमने मोबाइल वेटरनरी यूनिट भारत सरकार के खर्चे से पूरे देश के पशुपालकों को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। और इसी निर्णय के चलते अब जो बातें थी कि टेक्नोलॉजी वो किसान के फार्म पे, किसान के दरवाजे पर कैसे पहुंचे। जब हमको एम्बुलेंस मिला था बड़ा अच्छा लगता था, 108 डायल करने का मजा आता था, मोदी गाड़ी आ गई ऐसा लोग बोलते थे। मगर मेरा विनम्र मत भी था, आज भी है, कि पशुओं के बारे में किसी ने सोचा नहीं। हम तो कहीं से भी कैसे करके मशक्कत करके पहुंच जाते थे हॉस्पिटल में, डॉक्टर के पास। साधन सरकारी नहीं थे तो भी प्राइवेट का उपयोग करके भी जा सकते थे। मगर जो अबोल पशु, उनको कुछ हो जाता तो उसको वह ले जाना ही दुष्कर होता है और उनके पास तो कोई जाने वाला ही नहीं था, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती थी। इसीलिए मैं मानता हूं कि एक नेशनल लीडर के रूप में प्रधानमंत्री जी ने पशुओं के प्रति संवेदना का सबसे बड़ा निर्णय ये मोबाइल वेटरनरी यूनिट लेके। अभी हम चर्चा इस पर ही कर रहे हैं कि हमें सस्टेनेबल ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें करने का प्रयास हम कर रहे हैं लाइव स्टॉक में। इसका मतलब ये, मैं ऐसा समझता हूं कि ये परंपरा बनी रहनी चाहिए, पशुपालन का व्यवसाय चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मगर वो कैसे आगे बढ़ेगा? अगर इसमें पशुपालन करने वाले को 2 पैसा इनकम दिखाई नहीं देगी तो वो कोई करने वाले ही नहीं है। तो उसको कैसे हम सस्टेन करेंगे, उसकी आय को हमें ध्यान में रखते हुए उनकी प्रोडक्टिविटी के लिए और उनके हेल्थ के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। और इन दोनों को मदद करने के लिए ये मोबाइल वेटरनरी यूनिट ये सबसे बड़ा साधन हमारे देश के पशुपालकों के लिए प्रधानमंत्री जी ने उपलब्ध करवाया है। दूसरा निर्णय हमारे प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में मेरे विभाग की ओर से जो कार्यान्वित हो रहा है,
उसका भी मैं जिक्र करना चाहता हूं, वो है वैक्सीनेशन का। पूरे देश के मवेशियों को भारत सरकार के 100% खर्चे से वैक्सीनेट करने का निर्णय लिया गया और इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए कार्यवाही हुई। कोरोना वैक्सीन हमारे साइंटिस्टों ने बनाई, हमने पूरे देश में 200 करोड़ से ज्यादा उसको लगाने का काम किया और पूरे विश्व के कई देशों को भी ये वैक्सीन देने के, अभी पूरे विश्व में वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन का चर्चा है कि भारत ने जिस प्रकार से कोरोना मैनेजमेंट किया ऐसा विश्व के कम देशों में वो करने का उसको देखने को मिला। इसी प्रकार कोरोना वैक्सीन से पहले 1 साल पहले भारत के मवेशियों के लिए वैक्सीनेशन करने का निर्णय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिया गया था। मैं मानता हूं कि हम इस एनिमल हेल्थ के बारे में जब यहाँ डिस्कशन करने के लिए इकट्ठे होते हैं, उसी के संबंध में ये 2 निर्णयों को मद्देनजर रखते हुए भारत में क्या हो रहा उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। अभी अभी ही हमने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से एक एनिमल हेल्थ का बड़ा प्रोजेक्ट लिया है जिसमें हम इसके प्रिपेयर्डनेस का कार्यक्रम कर रहे हैं और मैंने पिछले ही अप्रैल में एक लॉन्च किया था, एपी करके एक हमारा मॉडल, एक टेक्नोलॉजी का लॉन्च किया था जिसमें एनिमल हस्बेंड्री के लिए पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव कभी अभी आ जाए तो इसके लिए अभी से हमें तैयार करना है, अभी से हमारे पास रिसोर्सेस होना चाहिए, मैन के लिए साधन होने चाहिए और ये पूरे देश में क्षेत्र वाइज होना चाहिए। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को अंजाम देने का काम भारत सरकार के यहाँ से जो हमारे स्पीकर हमारे डॉक्टर एलन ली, एडीजी WHO के जो बोले थे, ताकायाकी जी ने बोला, कैरोलिना जी ने बोला और इन सारे प्रतिनिधियों ने जो बातें रखी हैं उनमें ये एक विषय हमारे सबके संज्ञान में आना चाहिए और ऐसे मंचों से हमें इसको शेयर करना चाहिए कि हमें प्राणियों के प्रति देखने का रवैया बदलना पड़ेगा। अब हमें उनके प्रति सहानुभूति से आगे बढ़ना पड़ेगा, उनके प्रति प्यार से देखना पड़ेगा। हम प्राणी बोलते हैं तो हम अपना दर्जा थोड़ा ऊंचा रखते हैं, हम मनुष्य हैं, वो प्राणी हैं। मगर आप सबको पता होना चाहिए कि हमको जब सोसाइटी में रहने का हमने प्रारंभ किया तो हमारे लिए जो टाइटल बना वो सामाजिक प्राणी बोला गया, तो हमारा विशेषण प्राणी के साथ ही जुड़ा हुआ है, सोशल तो अपना हमने जोड़ दिया, मगर ये सामाजिक प्राणी का टाइटल उनकी हिसाब से हमको मिला है। सो हमारी ओर से भी इनको कुछ मिलना चाहिए कि हम भी इसको हमारे परिवार के सदस्यों के प्रति, उसी के प्रति हमारा व्यवहार हो। संवेदनशीलता ये बहुत जरूरी है। प्राणियों के प्रति नफरत का भाव जो है उसी को हमें रोकना होगा और उसके प्रति एक परिवार की, यहाँ जो G20 का सबसे बड़ा संदेश है, मैं मानता हूं प्रधानमंत्री जी की ओर के विश्व की ओर, ये वसुधैव कुटुंबकम का संदेश है। जब दुनिया में युद्ध का माहौल एक तरफ चल रहा है, उसी बीच में विश्व को वसुध, अब उससे भी आगे जाकर सभी प्राणियों के साथ भी हमारा यही सद्भाव का वर्तन हमें करना चाहिए। मुझे तो ये बताते हुए खुशी हो रही है, अभी मैं अपने इस प्रदर्शनी में घूम रहा था, 2 चीजें बहुत अच्छी मुझे लगी है वहां। एक तो वो अपना आयुर्वेद का EVM, इथेनो वेटरनरी मेडिसिन, अब वो आयुर्वेद दवा है और 30 जितने अलग अलग रोग को नियंत्रित करने के लिए एक ही दवा है और ऐसी आयुर्वेद दवा का नाम EVM चल रहा है। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उसका नाम तो हमें आयुर्वेद का रखना चाहिए, अपना कावा रख देना चाहिए, हमारा भारतीय कावा है ऐसा करके इसको प्रस्तावित करना चाहिए। हमारा दिक्कत यही है कि ये इथेनॉल वेटरनरी प्रैक्टिस वहां से आया, बाहर से आए, तो दुनिया में से कहीं इधर आता है हमारा, तब हम इनका गौरव करते हैं कि फॉरेन रिटर्न हो गया। इसलिए मैं कभी कभी बताता हूं ना कि हमारा जय श्री कृष्ण चल ही रहा था, बहुत ही अच्छा था,
मगर वो वाया फॉरेन घूमता घामता इधर आया और हरे कृष्णा हरे रामा हो गया तो सब चल पड़े, बहुत ही अच्छा है, हरे कृष्णा हरे रामा। अरे भाई हमारा जय श्री कृष्ण ही ओरिजिनल ठीक था। अब हमें बड़े गौरव के साथ और गर्व के साथ कहना चाहिए कि हमारी आयुर्वेद मेडिसिन है वो आदमियों के लिए और पशुओं के लिए सबसे अच्छी है, सबसे उपकारक। उसी दिशा में हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है इसकी कॉस्ट। ये एलोपैथी का एक ही दिक्कत है कि उसका बिल लाख से ही शुरू होता है, और आयुर्वेद का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि उसका लिस्ट 100 की नोट के अंदर ही आ जाता है। सो उसी को हमें अभी उसको साइंटिफिक बल देने का काम हमें करना चाहिए, और इस साइंटिफिक कम्युनिटी को इसका इवैल्यूएशन करके उसको आगे बढ़ाने का हमें प्रयास करना चाहिए। पर हम काम करेंगे तो बहुत ही अच्छे परिणाम हमारे पशुपालकों के लिए होगा। एक बात मुझे यहाँ जरूर कहनी है, जब हमारे अमूल के चेयरमैन और इनके कर्ता धर्ता इधर विराजमान है और हम आनंद में ये कार्यक्रम चला रहे हैं, तो मुझे याद दिलाना चाहिए कि इसके पशुपालन की, डेयरी सेक्टर की अहम बात यही है कि उससे डेयरी पशुपालक को क्या मिलता है, उसको पशुपालन करने से क्या आय मिलती है। हम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मॉडल प्रोड्यूस करने में कामयाब रहे हैं, वो है अमूल मॉडल। अमूल मॉडल का सर्वश्रेष्ठता क्या है, बचाए रखिए थोड़ी देर के लिए, सही समय पे लगाना। किसी भी प्रोडक्ट मार्केट में आती है तो मार्केट वैल्यू उपभोक्ता जो चुकाता है और जो प्रोड्यूसर है उसको जो मिलता है, उसके बीच में बहुत अंतर होता है। हमारे टमाटर किसान के 10 रुपये केजी उनके फार्म से खरीदे जाते हैं, मार्केट में 100 रुपया होता है, और उसका हेडलाइन भी बनता है कि बहुत ही आसमानी हो रही है, मगर वो आसमानी कभी किसान के घर पे कभी आसमानी पहुंची नहीं है। आसमानी उपभोक्ता को और मार्केट के बीच का इश्यू होता है। ये अमूल मॉडल की वजह से मार्केट रेट का 75% प्रोड्यूसर को मिलता है। ये हमारा सक्सेस स्टोरी, ये हमें दुनिया को दिखाने योग्य बाबत है, हमारी बाबत, हमारे देश की बाबत, हमारे आनंद की बाबत है। ऐसा कहने में भी हमें गर्व लेना चाहिए। ये यहां से निकली आवाज है जो आज हम विश्व के मंच पर से भी बड़ी गरिमा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कंज्यूमर जो कॉस्ट चुकाता है वो प्रोड्यूसर को मिले और वो 75% मिले। दुनिया के किसी भी मॉडल में ये उपभोक्ता को ये राशि नहीं मिल रही है। ये मॉडल हमारा अमूल मॉडल है, इसी के बारे में भी दुनिया में इसकी चर्चा होना चाहिए। अभी क्या क्या बताए, क्या क्या ना बताए, आप सब लोग इसको सस्टेन करने के लिए जो भी इस मंथन के जरिए आप निकालेंगे अमृत, मैं मानता हूं कि भारत सरकार और राज्य सरकारें इनका कॉग्निजेंस बहुत गंभीरता से लेंगे। मगर मुझे आप सबको बताना चाहिए, और आप सब जो बाहर से लोग आए हैं उनसे मेरा अनुरोध है, और एनडीडीबी के मिनेश जी को भी मैं बताना चाहूंगा कि इन मेहमानों को अच्छे शिव मंदिर का दर्शन करवाइए, उसको अवश्य ले जाए, कहीं ना कहीं नजीक में भी होगा, और इनको सुविधा रहे तो सोमनाथ दादा के पास भी ले जाना। क्यों? वो उसी में से आपको पता लगेगा कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी होगी। जहां कछुआ भी है, जहां नंदी भी है, जहां सांप भी है, जहां गाय भी है, जहां शेर भी है, जहां मयूर भी है, इतने सारे लोग एक फैमिली में रहते थे और एक दूसरे के हरीफ हैं, फिर भी सामंजस्य से एक फैमिली के रूप में रहते हैं, और उनकी पूजा करना उसको हम शिव पूजा कहते हैं। ये भारत का दर्शन है, ये हमारा दर्शन है। ये कोई ऐसी कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये भारत की परंपरा थी कि सभी प्राणियों में सामंजस्य होना चाहिए, सबको एक दूसरे को सहना चाहिए, एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए। सबका सह अस्तित्व का और सहजीवन का
जहां पूजन होगा उसी का नाम शिव पूजा होगा। शिव का एक अर्थ है कल्याण, शिव का अर्थ ही कल्याण है। सो कल्याण प्राप्ति के लिए हमें शिव पूजा की ओर जाना चाहिए, और शिव पूजा का अर्थ ही यही है कि आप सब मिलकर रहें, आपको झगड़ा नहीं करना है, एक दूसरे को परेशान नहीं करना है, सह अस्तित्व, सह जीवन, ये भारतीय दर्शन है और उसी में हमारा आयुर्वेद है। अभी हमारे देश के पशुपालकों के लिए हम ब्रीड इंप्रूवमेंट के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं, जीनोमिक उसके चयन करने के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं। उनके अभी अभी हमारे फिशरीज सेक्टर में हमने एक क्विक रिस्पांस मिले, इसके लिए एक ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप के जरिए आप जहां से भी कोई पशु होगा फिशरीज सेक्टर में काम करने वाला, वो अपनी हैचरी में किसी भी प्रकार का डिसीज उनको मिलेगा, वो तुरंत ही वहां से अपलोड कर सकता है, उसका पिक्चर भी दिखा सकता है और उसी को तुरंत रिस्पॉन्ड कर सकते हैं हम। इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हम खड़ी कर रहे हैं, ये सस्टेनेबली हम ये पशुपालन के व्यवसाय को कैसे आगे बढ़ा सके, परंपरा से कैसे, क्योंकि इसीलिए तो हम इनको हमारे परिवार के सदस्य के रूप में मानते हैं। हम सिर्फ इसको उपभोक्ता का साधन नहीं मानते, उपयोग का साधन ही नहीं मानते। हमारे यहाँ ऐसी परंपराएं थी कि यदि हमारा बेल ने हमारे साथ 15 साल से अधिक साल तक हमारा काम किया है, तो फिर हम इसको वीआरएस देते थे, हम उसकी नाथ काट देते थे, और फिर वो हमारे खेत में जब तक जिंदा रहे तब तक फ्री ऑफ कॉस्ट फिरता रहता है, उसको कोई रोकता नहीं था, उसको निकाल नहीं देते थे, उसको पालन करते थे। ये परंपराएं हैं, ये हमारे इथोज है। इसको भी अभी हमें कहीं राइटिंग में लेना पड़ेगा, हमारी एकेडमी में इसको डालना पड़ेगा, उसी दिशा में हमें जाना पड़ेगा कि ये हमारी परंपराएं थी पशुपालन की। इसीलिए हजारों साल से, अभी हम लिख रहे हैं कि 5000 साल से, मगर ये शिव की कल्पना कितने साल पर कितने वेद में किया है किसी को पता है, उसको तो आदि भगवान माने जाते हैं। उसी में भी हमारे तो ये पशुपालन की बहुत ही साफ कल्पना इसमें दिखाई दे रही है। और अभी भी आप देखेंगे, मैं तो बॉर्डर स्टेट में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो वाइब्रेंट विलेज का कॉन्सेप्ट लिया है, तो बॉर्डर के विलेज में जाने का होता है। अब वहां इतनी विषमताएं होती है, लॉजिस्टिक की, तापमान की, सारी, उसके बावजूद वहां के लोगों का जीवन किस पर चलता है? पशुपालन पे चलता है। वहां और कोई इंडस्ट्रीज का स्कोप नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी का स्कोप नहीं है। वहां के लोगों को जीवन देने के लिए एक ही सहारा है और ये पशुपालन है। तो उसी को हमें सस्टेन करना ही पड़ेगा। उसमें हमें टेक्नोलॉजी के लिए, हमारे नए नवाचारों के लिए, विश्व में जो भी चल रहा है उन सभी को समेटते हुए ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से ये हमारे जैसे देश में पशुपालन को और अच्छी तरह से, पशुपालकों के जीवन में बदलाव लाने का हम इसमें से कैसे उनको सहारा दे सके, नई पॉलिसियां कैसे घट सके, उनकी आय को कैसे बढ़ा सके। और एक मैं और इनोवेशन भूल रहा हूं, मगर मैं सबको अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग बताना चाहिए और उसका उपयोग करने के लिए पशुपालकों के बीच में अवेयरनेस के कार्यक्रमों को करना चाहिए। यहाँ बैठे हुए लोगों से और मीडिया के साथियों से मेरा अनुरोध है कि आप जब भी पशुपालन के लगत किसी भी सभा में आपको जाने का मौका मिले, तो उनमें से वक्ताओं के बारे में, नेताओं के बारे में कुछ कहे ना कहे, कोई आपत्ति नहीं है, मगर वहां जो जानकारी शेयर होती है, जो टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन होता है, जो नवाचार का प्रदर्शन होता है, वो पशुपालकों के बीच में अवश्य पहुंचाने का काम आप सब लोगों को करना चाहिए और इनकी जानकारी वहां तक पहुंचानी जरूरी है। अब पशुपालकों को बताना चाहिए कि राज्य सरकार में ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं, भारत सरकार में ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं, दुनिया में ऐसे नवाचार हो रहे हैं, हमारे देश में हमें ऐसे करना चाहिए। ये सारी चीजें जितनी अवेयरनेस के कार्यक्रम के चलते ही ये रोकथाम करने में हम कामयाब रहेंगे। हम डर रहे हैं, ये सारे विषय इसलिए आ रहे हैं कि वहां से कुछ इधर आ जाएगा, और ये कोरोना के बाद सबके मन में खौफ पैदा हो गया है, इसके चलते अब उनकी हेल्थ के बारे में सब सोचने लगे। अच्छी बात है, मगर उसी के बारे में जितना पशुपालकों के साथ सरकारों का, प्रतिनिधियों का, डेयरी संचालकों का, एकेडमिशियनों का कनेक्शन होगा,
और एक दूसरे के बीच में जितने बातचीत करने के, संवाद करने के कार्यक्रम हम बनाएंगे, उसी के चलते उसी लोगों में अवेयरनेस के अच्छे कार्यक्रम चलेंगे। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। आपको, आपने सोची ना हो ऐसी सफलता मिले और इसे ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से पशुपालन क्षेत्र में और भी नई दिशाएं खुले, यही शुभकामना के साथ पुनश्च सबको जय श्री कृष्ण। बहुत 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 धन्यवाद। आपके शब्दों ने आज हम सभी में एक जोश और उत्साह पैदा किया है। आपके प्रोत्साहित शब्दों के लिए खूब खूब आभार। और पुरानी परंपराएं आपने हमारे साथ आज इस मंच पर सभी के साथ शेयर करी, और कैसे हम सब मिलकर एक बदलाव ला सकते हैं वो भी आपने हमको बताया। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आगे बढ़ते हुए अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, एंड आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट एंड इनवाइट ओवर हियर Abhijit sir to please join us and share vote of thanks, concluding remarks with everybody. Thank you. Jai Shri Krishna. Most respected Honorable Shri Purushottam Rupalaji, Honorable Minister, Fisheries, Animal Husbandry, Dairying, Government of India. Ms. Alka Upadhyay ji, Secretary, Department of Animal Husbandry and Dairying, Government of India. Minesh ji, Chairman, NDDB, all dignitaries on the dais, as well as honorable dignitaries sitting off the dais. I am very humbled and privileged to get this opportunity to place a vote of thanks. But it is also one of the difficult job after speaking after our honorable minister, because the environment you created, sir, and your message is so loud and clear to all of us that I think our job ahead would be much more challenging, and it will be much more task worthy. Sir, I'll just share my personal experience today. Before that, I will tell one thing, that when I was studying veterinary and animal husbandry in 1982-87, I used to read about Anand and that our all movement, our Korean Sahab and all. So we always go to many pilgrimages. You know, we go to Kashi, we go to Somnath and all. For this animal husbandry sector, I think this is one of the pilgrimage place where each one of us should visit and thank in the sector of life sector, that is Anand. Thank you. Secondly, sir, you told that all our that reporter and newspaper people should carry forward the message of technology and the good things. I had an opportunity to come from the guest house to the site of exhibition, and my two colleagues were traveling with me, one our IDF DG and my friend Kugita. And I could see that the 10 minutes non-stop, our IDF DG was telling to Kugita ji that what is Anand, what is our livestock sector, and what it is. There is a museum, there is a school and operation plan. I was just listening that, and probably that is one of the power of such of the seminar and some of the symposium. And I'm sure that short messages, such conversation is going on every places. And when will we go from this particular place, we carry many, many good news, many, many good messages along with us. All of you have told, I think I was counting, tally marking some of the words when you speak.